In our previous videos, we've discussed about the different types of credit cards and how you can choose the right card for your lifestyle. In this one, we'll tell you about what you need to know when it comes to applying for a credit card. पहले देखिए कि अवेलेबल कार्ड्स में से आपके लिए कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ में चेक कीजिए कि कहीं आपके बैंक ने कोई प्री अप्रूव कार्ड तो ऑफर नहीं किया है। अगर प्री अप्रूव कार्ड आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है और उसके बेनिफिट्स वही है जो आपको चाहिए, तो आप उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो सकता है। नेक्स्ट, you'll need to make sure you have the right credit score. Each financial institution will have a minimum credit score requirement that you must meet to be eligible. It is always best to maintain a score above 720. Now let's talk about the eligibility criteria and the documents required. There's a minimum income criteria and eligible age criteria that varies for each financial institution. Additionally, you'd need to submit certain documents such as address proof, identity proof, and income proof to apply for a credit card. So make sure you check all these aspects with your issuer before applying. Diverse range of credit होना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग लोन्स या कार्ड्स है और आप टाइम पर पेमेंट्स कर रहे हैं, तो आप अपने लेंडर को एक रिलायबल बोरोवर लगेंगे। इससे आपके कार्ड के अप्रूवल में आसानी हो सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और आप उसके बेनिफिट से ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो उसको कैंसिल करने की बजाय आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड कैंसिल करने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये आपका इकलौता फॉर्म ऑफ क्रेडिट है। इसलिए कार्ड अपग्रेड करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर या खुद बैंक ब्रांच विजिट करके अपना कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हियर्स अ क्विक टिप, don't apply for too many credit cards at once. This is because every time you apply for a card, your lender runs a check on your credit history. And if you've applied for too many cards, it automatically presents you as a person that's incapable of handling their finances effectively. So, it's wiser for you to take time and find the right card rather than applying for cards that you may not get approved for. If you still wish to apply for multiple cards, then you can spread out your requests so that they are at least 6 months apart. But make sure that you do not apply for another card immediately after you have been rejected for a card. Once you've gone through all these important aspects, you can easily apply for a card online by visiting websites such as Bajaj Markets, where you can also compare different cards before you apply for one. Did you know the first bank credit card in India was issued by the Central Bank of India in 1980? Stay tuned for more interesting topics in our upcoming videos. Till then, keep watching, keep learning.